Every year in Tharparkar, 1 in 10 children die before reaching the age of 5. The ones that survive are left to live in the most abysmal conditions. Even in the 21st century, there is a place in the midst of rural Sindh where locals are living in the most dreadful circumstances. Every day, they travel hundreds of kilometers to fetch water for their basic needs. This water is filthy and unfit for drinking. In fact, it is the leading cause of many diseases that often result in death. Hundreds of children die each year due to a lack of medical care for expecting mothers as well as their newborn children. The ones that survive are weak due to malnutrition. Health and educational institutions, which could have helped an otherwise underprivileged community to break the shackles of poverty, are non-existent. It is this vicious cycle of deprivation that continues the long suffering of the Tharis. It is a dark time in Tharparkar. Humanity First Pakistan has come forward as a ray of hope for the locals. Under a host of programs, including Water for Life, Global Health, Knowledge for Life, and many more, we are aiming for a better Tharparkar. More than 500 water wells, hand dug by Humanity First, now provide clean drinking water to hundreds and thousands of people, reducing travel times for fetching water to just a few minutes. Our Chohra schools now ensure the provision of basic primary education to all children of Tharparkar. Our eye camps are giving the gift of sight to hundreds. And last but not least, we are happy to introduce our free maternity camps, which will enable us to bring healthcare solutions to the doorsteps of the Tharis. पिछले 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मैं ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट की वॉलंटियर डॉक्टर हूँ जो मैटरनिटी कैंप्स हमारे कंडक्ट होते हैं मैं उसमें रेगुलरली आती हूँ और हम हर ऑल्टरनेट मंथ पर आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8 कैंप्स हमारे हो चुके हैं और पर कैंप जो कि 2 दिन पे मुश्तमिल होता है एक दिन हम 2 कैंप्स करते हैं और एक दिन हम 1 कैंप करते हैं और इनमें एवरेज हमारी तकरीबन 900 टू 1100 टू 1200 भी 1-2 कैंप्स में 1200 तक भी हमारे पेशेंट्स हुए हैं और जो जनरल यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं सबसे ज़्यादा वो ये है कि पेशेंट्स में मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उसकी वजूहात मेरा ख़्याल है हम सब थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि एक अंडर डेवलप्ड एरिया है जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का है पानी नहीं होता तो जिसकी वजह से यहाँ पे ना फसलें होती हैं ना कोई और चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है हाइजीन भी बहुत ज़्यादा पुअर है दूसरी बात है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है तो डेवलप्ड एरियाज़ तक इन लोगों की रसाई बहुत कम होती है जिसकी वजह से इन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ तकरीबन ना होने के बराबर होती है Health was inaccessible, leaving the locals with no choice but to hope that their sick would recover miraculously without any help. Even the ones that could afford the local transport would have to travel long distances to see a doctor and pay hefty fees. Our maternity camps have completely changed the dynamics. Our teams of volunteer doctors regularly visit various villages and provide medical guidance to both women and children. Similarly,
expectant mothers are guided on taking care of themselves during pregnancy. Medicines are also prescribed when necessary, and follow-up camps to the same village are also arranged. Most of the diseases related to this area are related to malnourishment. They have multivitamin deficiencies. In addition to that, there is lack of awareness. The kids, they can't take care of themselves. They don't know what to eat. They are fed by the mothers. And if the mother is not aware that what she has to feed her children and how to take care of the hygiene, then it becomes a major problem. Most of the diseases I encountered here are nasopharyngeal diseases, and it's because of the dust and lack of hygiene. So ideally there should be a hospital over here. If not all of the resources are available in that hospital, then it's okay, but at least the problems are identified. So through these camps, at least we identify the problem and we guide the patients that they need medical attention for this problem, and this disease is treatable. अभी रिसेंट एक कैंप के अंदर एक पेशेंट मेरे पास आई जिसका वो 7वीं दफ़ा प्रेग्नेंट थी और उसके पास एक भी बच्चा ज़िंदा नहीं था. उसके 6 के 6 बच्चे वक्त से पहले तकरीबन 6 से 7वें महीने में पैदा होते थे और उनकी मौत वो एक्सपायर हो जाते थे तकरीबन 2 घंटे से लेके 7 दिन के दरमियान. उसके तमाम बच्चे घर में ही होते थे और विदाउट प्रॉपर ट्रेंड किसी भी खातून की मौजूदगी में नहीं होते थे. अभी भी वो प्रेगनेंसी के साथ आई थी और उसकी ख्वाहिश ये थी कि ये बच्चा उसका बच जाए. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने उसको इस चीज़ के लिए गाइड किया कि जो हो गया उसके लिए तो हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रेगनेंसी उसकी इंतहाई हाई रिस्क है. उसको डेफिनेटली किसी बड़े अस्पताल में अपना नाम लिखवाना चाहिए. एक तो ये है. दूसरी बात है जो हम बेसिक चीज़ें उनको यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमने प्रोवाइड की हैं और गाइडेंस ज़रूर दी है कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस वक्त हॉस्पिटल ज़रूर जाना है. वो कुछ मुतमईन भी लग रही थी कि जी ये ज़रूरी है, क्योंकि उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं होता कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल जाया जाए या किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और क्या दवा किस महीने से इस्तेमाल करनी है. Thousands of patients have been diagnosed, treated, and guided under this global health campaign. After the success of our Water for Life project, Humanity First Pakistan is fast becoming popular amongst the Tharis for its highly professional and devoted doctors, its high-quality medicines, and its compassionate team of volunteers. So after graduation, I looked up a lot of NGOs. I heard about Humanity First. I approached them via Instagram. They got back to me almost immediately, and I was very much interested in doing anything that they thought that I could contribute in any manner. They asked me to come with them for a medical camp in Tharparkar, and I thought that was a great idea. So this was an extremely different experience for me. I have done clinics in resource limited settings, but nothing of this sort. I have never been to a completely this does not even begin to define how resource limited this is, because we take the medicines here ourselves and we bring the medicines to the people at their doorsteps. And the scale of this work is enormous because people are informed about it days before the camp actually takes place. People are actually afflicted with apart from malnutrition, most of the diseases are pretty much the same as what we see back home in Karachi, for example. The only difference is that over there, people are able to get help within an hour, for example. But here, they have to wait for days, and something as simple as an ear infection can lead to very bad complications, hearing loss. So timely identification lack of timely identification of the disease leads to things that are extremely avoidable. For example, I had one patient who was around 2 years old, and the kid had an ear infection when she was 6 months old, and not treated turned into a chronic ear infection, eventually resulting in hearing loss. And now the mother came to me and she wanted to know what could be done for her hearing loss, and there was nothing that I could do here in this setting. So the answer lies in providing timely treatment to people
And that's why the work that we're doing here, identifying people who need our help, is extremely important. Even if we can't help them here, we can at least refer them to a nearby hospital. And inshallah, eventually we can start looking at building hospitals, well-equipped hospitals here. So it was a great experience, and I look forward to working with Humanity First in the future as well. Our free maternity camps are making a difference in the lives of the Tharis. डॉक्टर आए असां सूड़ पुठा में सूड़ मथे में सूड़ अंगा में सजा में सूड़ वजह डॉक्टरियां चेक करे असां दवाएं सुठे ॾिनी थी सुठे नमूने चेक करी ते असांजी बीमारी जो इलाज करी ते असां दवा टिकी ॾिनी ते लेडी डॉक्टर आया आहिनि ॿारनि लाइ खाधे पीअरे खुराक में असां सॼे नमूने सुणाई ते सम्झाई ते सुठे नमूने साफ़ सूफ़ से खाओ साफ़ सूफ़ से पियो हाणे उमेद वारी ॾोकरी ना उहो के सुठे नमूने खाए सुठे नमूने वास है लेडी डॉक्टर असां कहते नंढे ॿार न कहते साफ़ सूफ़ से खाराओ साफ़ सूफ़ से खिलाओ साफ़ सूफ़ से खाओ पियो गंदाई छॾो आपरी सफ़ाई रखो खाण पीअण अछू पाई रखो सॼी शहरी साफ़ सूफ़ से कुल खाओ पियो ॿार साफ़ सूफ़ गबो गंदी कुल धोइड़ो है तो उहो न सुठे नमूने बीमारी किनी आहे जे गंदो होसे तो उहो न बीमारी आसे डेडी सुना खराब थे तो नल में खराब थे तो खून जाम हले तो 5 महीना और बाल बिगाड़ तो डॉक्टरियां है कोनी तकलीफ जाम थे थी डॉक्टरियां है कोनी असाना तकलीफ जाम है 300 घर री बस्ती है 6 बच्चा जीता जागता बैठा है तन जो को जाया था वो कुल रगत थे गया रगत खून थे गया खून थे गया डॉक्टर तो कोनी डॉक्टरियां कोनी तकलीफ मिठी खणे गया मिठी पुगाए को ते एक 6 महीना रो एक 5 महीना रो एक 4 महीना रो अध काल बंद करे आई हां मां 6 बाल पेट है अगे 5 बाल है वो मड चेक करन आई 6 महीना और 9 महीना You too can sponsor a free maternity camp in your name or the name of your loved ones. A 2-day sponsored camp can provide healthcare to more than 1,000 patients. Help us, help them. ज़च्चाओं के लिए भी हाजिर मदद है दाइम पेशे नजर है अपने अल्लाह के इताअत